stranger to the water, dark and dusty. Painted on the sky. Let's see faces in the dark. जी viewers, welcome to Tech and Travel Soul and Go Media Services। आज मैं डाउनटाउन टोरंटो में हूँ, CN टावर के पास, जो कि कनाडा में सबसे फेमस अट्रैक्शन है। Hello viewers, welcome to Tech and Travel Soul and Go Media Services। आज डाउनटाउन टोरंटो CN टावर की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, और ये नीचे सामने यूनियन स्टेशन है, जो कि कनाडा का सबसे बड़ा और बिज़ी ट्रेन स्टेशन है। पूरे कनाडा को ट्रेन्स वहाँ से जाती हैं, और यहाँ पे रॉजर्स सेंटर्स भी है, जहाँ पे गेम्स होती हैं। ऑन द अदर साइड इंडोर ये प्ले एरिया है, जिसके अंदर काफ़ी गेम्स होती हैं, और आज कोई मैच चल रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। पीपल आर कीप कमिंग। ये एक्वेरियम है, रिप्लीज एक्वेरियम। I know what you're thinking first, so let me know what you're thinking first. गेम देखने के लिए लोग आ रहे हैं आज ब्लू जेज की। एक साइड पे रिप्लीज एक्वेरियम, दूसरी साइड पे रॉजर्स सेंटर। ये CN टावर की एंट्रेंस है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको टिकट बाई करना पड़ता है। ऑब्जर्वेटरी डेक है इसके अंदर, और ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है। टॉप पे मैं आपको दिखाता हूँ, वो ऊपर ऑब्जर्वेटरी डेक है, और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है। टूरिस्ट अट्रैक्शन है कनाडा में, ये मोस्ट विजिटेड। दूसरी तरफ आज क्योंकि गेम है यहाँ पे इनसाइड ब्लू जेज की, तो इसका बहुत ज़्यादा रश है। It's under 500 feet per second. Yeah, it's under 500. Propane here. Right, Indy. Ready to book tonight's ball game. Carolina, Cleveland lineup. I think that tattoo that we're talking about, but on the other side. गेट से लोग अंदर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरे सामने जो है वो लेक ओंटारियो है। ये सामने रोड जो है ये गार्डनर एक्सप्रेसवे है, और उसके साथ आगे लेक ओंटारियो और टोरंटो आइलैंड।
पे एक म्यूज़िक भी चल रहा है साथ साथ।